Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hello friends, here I am with a very important topic which is important in respect to different entrance examination as well as your academic examination. So in your entrance examination like OTT, OSSTT, CTET or other examination, you must found two or more questions related to that topic. So this is our part 1 class where we discuss the concept of test, examination, appraisal, and measurement. And in our part 2, we later discuss the concept of assessment and evaluation. So let's start about the different concept of evaluation in our part 1. Okay. So the word test, generally आमे माने यू टेस्ट जो वर्ड टाकू विभिन्न जगह डिफरेंट वे रे आमे ताकू यूज करंती बट एक्चुअली व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेस्ट आज आम से जिनटा क्लारिफाई करवा जोटा आम पाखे थिला आगु कॉन्सेप्ट अबाउट टेस्ट से जिनटा को एबे जो टेस्ट रो कॉन्सेप्ट करबा से दीटा कॉन्सेप्ट को हम कंपेयर करबा और रियलाइज करबा व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेस्ट. So test is a very common term used in various ways, as I told, where you may find the use of test as a tool or a technique. So different time रे हमें different जगह रे कोठी हमें tool हिसाब रे ताको use करंती and also we use test as a technique. And it is also considered as the most commonly used method for the measurement of educational and psychological attributes. And in the dictionary meaning of the test, you can find that test is a series of question. That is a bunch of question. We also consider that is a bunch of question set or question set भी हमें ताको कहि परिबा on the basis of which some information is sought. ଗୋଟେ particular information को हमକୁ जानिया ପାଇଁ हेले आमे ता उपरे जदि किछि some sorts of questions prepare करूचंती से जो set of question को आमे test बोली कहू. Test is also defined as a method to determine individual's ability to complete certain task. After completion of a certain task, if you want to, as a teacher, if you want to measure the particular objectives you achieved or not by observing the ability, okay, so you can use the procedure of testing or you can adopt test procedure, okay, or to demonstrate mastery of a skill or knowledge of content. The content रे आमे केते दूर मास्टरी सेतरे आसिला आमे केते दूर सेतरे स्किल्ड हेलु आम भितरे केते नॉलेज रो डेवलपमेंट हला all these things are measured by the help of test. And it is also considered as a tool or systematic procedure for measuring a sample behavior by posing a set of questions. सबु जगह रे एई कथाटा को तमे टिके मार्क करथु जे that is a set of question in a uniform manner designed to measure any quality, ability, skill and knowledge. ये सब जिंस को हम मेजर कर परिबा का थ्रू रे ना गोटे सेट ऑफ क्वेश्चंस थ्रू रे. So being defined as a test as an organized succession of stimuli designed to measure quantitatively or to evaluate qualitatively some mental process, traits and characteristics. Okay, both qualitative process क्वांटिटेटिव प्रोसेस एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस रे आमे विभिन्न कथा जो आमे पिलांकर विभिन्न साइकोलॉजिकली हो एकेडमिकली हो विभिन्न कथा को आमे जते बेले मेजर करंती जो प्रोसीड्यूर को आमे यूज करंती ऑर्गेनाइज्ड मैनर रे दैट ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीड्यूर इज नोन एज टेस्ट अकॉर्डिंग टू बी. ओके, क्लियर टू ऑल? देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here if you analyze all these definitions, you can easily identify the following characteristics. What are the basic characteristics of test? Test have some organized stimuli. You must find out some organized stimuli. That means all the test comprises different questions. Okay, questions. So here in every question you found an objective. Okay,
objective, and according to that objective, teacher provides some stimulus and get some responses. So these stimulus are known as test items in an organized sequence. And also you remember, test is a organized sequence, that means it must maintain so a particular difficulty level, a hierarchical structure, etc. ये सब जिनस को ए टेस्टिंग प्रोसीड्यूर मेजर माने जो मेंटेन करे to test some specific traits or attributes. गोटे पर्टिकुलर ट्रेट सब कथा को एकाथर कर नहीं कि आमे गोटे टेस्ट तैयारी करबा डिफिकल्ट, बट इन ए पर्टिकुलर टेस्ट और इन ए पर्टिकुलर एट्रिब्यूट वी कैन सेट a set of question, then that set of question is considered as a test. Then another characteristics of test, that is the test can be used as a tool for quantitative measurement as well as qualitative assessment. So in both case, both qualitative रे और quantitative रे आमे टेस्ट को यूज करि पारंती. A test is a systematic tool to measure sample behavior. Particular behavior को आमे जदि measure करिया कथा चिंता करूछथि, then also we can measure the test, the behavior by the help of test. Then come to the next point, that is, if you go through the various testing tests being used for assessment and evaluation, you can find the variety of tests are there, and all these tests can classified into various criteria. आउ किछि क्राइटेरिया मु एठी तुम मान को दउची ताकू देखो भलो से. So according to administrative condition, okay, को हिसाब रे हमें ताकू अप्लाई करूचंती administrative condition, we found there are two types of testing, that is individual test and group test. Similarly, according to the scoring procedure, we found there are two category of testing, that is objective test and subjective test. And according to the time limit, we have two tests, that is power test and speed test. In the power test, we found we measure the accuracy, and in the speed test, how a student enabled to manage the time guideline. Okay. And the next form of test, that is nature of testing. को भलिया हमें टेस्टिंग करूचंती. So here in under the nature of testing, nature of items, we found there are three types of testing procedures are there, that is verbal, non-verbal and performance testing. And in form of standardized procedure of test, that is standardized test which maintain all the criteria of testing procedure. And another one is teacher made test, it maintain only few number of testing criteria or conditions in the preparation. Okay, so these are the different criteria, these are the different form of testing we use in different assessment and evaluation processes. Okay, so these are concept of different testing procedure or test. Now come to the next part, that is examination. What is the meaning of examination? ଆଉ जो ए वर्ड टाकू भी आमे बहुत फेमिलियर, बहुत जगह रे आमे सुनि जति, कारण we also face different type of examination. So what is the actual meaning of examination? से कथाटा को एठी रियलाइज आमे करिवा. So examination is considered as a formal system. You remember examination, that is considered as a formal system to know how much one has to achieve or how much one has to achieve or where one stands in comparison to others. So in the process of examination, that is a formal system जो थिरे की formality maintain हुए, systematic concept रे हमें जानती, कौन जानिया पे हमें सेट चिंता करंती, जो गोटे पिलाटी तार अचीवमेंट लेवल कौन, से केते पर्यंत अचीव करिछि बा तार अचीवमेंट लेवल कौन, से कोन लेवल ले अछि लर्निंग प्रोसेस रे, से सब कथा को हमें थ्रू एग्जामिनेशन जज करि परिबु. एंड आल्सो we compare our student with other student, the comparison to others, that is another criteria of examination. It is basically a test to see how good somebody at something. गोटे लोक गोटे पर्टिकुलर एरिया रे केते कॉम्पिटेंट, केते डेवलप्ड, ओके, से कोन स्टेज रे अछि से एरिया रे, से कथा को हमें जज करिया पई we use different examination procedure. So generally the examination is considered in two senses. कौन कौन हमें देखिबा. One, to know about how good one is, केते से पर्टिकुलर एरिया रे से केते भलो, and another is to know
the shortcomings or where is one lacking. तो गोटे जगह रे through the examination we can judge the ability or the advantages or the strength part of an individual. Simultaneously, at the same time, we also realize what are the shortcomings or what are the lacunas or what are the hurdles which found at the time of learning process, what are the lacking concepts are behind the student. We also judge by the help of examination procedure. गोटे एग्जांपल देके सी क्लैरिफाई कला जे एग्जांपल ऑफ फर्स्ट सेमिस्टर or annual examination or example of other each unit test, diagnostic test etc. ये सब थिरे आमे पिलांकर lacunas problem ये सब जिंस को आमे जानि परिबु जज करि परिबु. Okay, so examination may be classified in also various types in different criteria. कोन criteria को आमे देखिबा. The first one is mode of examination. को हिसाब रे आमे को वे रे आमे examination टा को conduct करछु. That is called as mode of examination. In mode of examination we found there are three types of examination procedure, that is written examination जोटो को हमें जानि छथि हमें एग्जाम रे दे के आछथि. Similarly oral type of examination जोटा कि हमें मुहरे पचारन जोटा को हमें ओडिया रे ताको हम मौखिक एग्जाम बोली कहंती. Similarly practical examination जो माने साइंस स्टूडेंट से माने भलो भाबरे जानि थिबो ए कथा बाबद रे. तो आर्ट्स पिला माने भी विभिन्न जगह रे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुए से सब कथा को भी देखिथिबो. तो एई भलिया मोड ऑफ एग्जामिनेशन वी फाउंड देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर. एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, पर्पस को जदि हमें नबा, द फर्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर. हियर इन द प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन वी डायग्नोसिस द मेजर प्रॉब्लम बिहाइंड आवर स्टूडेंट. सिमिलरली परफॉर्मेंस गोटे पर्टिकुलर एरिया गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट गोटे पर्टिकुलर कंटेंट रे तार परफॉर्मेंस केमिति कोन अछि आमे तो केते हेल्प करि परिबा ए कथा को जानिया पई हेले मध्य वी एडमिनिस्टर डिफरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस. सो these examination processes are come under purpose. And similarly promotion departmental examination different जगह रे होची for the promotion process. तो से promotion process रे जो examination conduct करा जाय से सब जिंस purpose under रे रहिबो. The next one is coverage. तो ओटा पिला को हमें होल टोटल ऊपर जो विभिन्न टाइम रे हमें एग्जामिनेशन करूचंती टू नो अबाउट देयर परफॉर्मेंस एज वेल एज टू अपग्रेडेशन. ओके, फॉर द पर्पस ऑफ अपग्रेडेशन एई कथा को नै कि जो प्रोसेस रे हमें एग्जामिनेशन करंती सेटा सेही कहा अंडर से सब आसे ना कवरेज अंडर रे आसे. तो हियर कवरेज अंडर रे मध्य तीनटा कैटेगरी रो एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर होची, दैट इज एनुअल, सेमिस्टर एंड मंथली. ए सब बाबद रे तुम ऑलरेडी जानिछो. And next one is objective, that is objective based examination procedure. केते बेले को कथा को हमें जज करिया पय चाहू जंदी सेही वे रे हमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करंती, that is the base of objective concept. So here under the objective based we found there are three types of examinations are there, that is academic examination, then professional academic examination different जो हमरो जो क्लासेस रे जो एग्जामिनेशन हुए हाफ ईयरली by annually by semester रे ई सब विभिन्न प्रकार एग्जामिनेशन होची. these are called academic examination to know about the academic performance. Similarly next one is the professional examination. Here how we mastery over our profession एई कथाटा को हमकु जते बेले जज करिया पय पड़े, जते बेले हम एई कथाटा को जानिया पय चेष्टा करंती, at that time we also use different examination procedure and these examination are come under professional examinations. Also by the help of professional examination we can measure the skill of an individual. The next one is the competitive examination. ए बाबद भी तमे सब जानिछो बा तमे सब दोउछो एग्जाम विभिन्न competitive examination. These are called objective, that means these are objective based. गुटे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को नै की एग्जामिनेशन जते बेले करा जाउची से सब जिंस से एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर को हमें ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन बोली कहू. Clear to all? Okay. The next one is appraisal. तो appraisal वर्ड टा जनरली हम एजुकेशन प्रोसेस रे बहुत रेयर यूज करा जाय, बट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर डिफरेंट कंपनी वी फाउंड द वर्ड appraisal used in very frequent way. Okay, so what is the basic meaning of appraisal? Appraisal are judgments of a characteristics, traits and performance of others
गोटे इंडिविजुअल तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन, तार कैपेबिलिटी, तार डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सब कथा को आमे कैरेक्टरिस्टिक्स भितर रखिबा. The next one is the traits, ability, capability को आमे traits भितर रखिबा, and as well as the performance of others. On the basis of these judgments, we assess the worth or value of others and identify what is good or bad. Okay, through this judgment we can evaluate or we can measure the goodness and the badness of an individual. In industry performance appraisal is a systematic evaluation of employee by supervisor. तो जनरली अप्राइजल जो हमको दियंती जनरली हम सीनियर मोस्ट जो माने थांती सेही मान को थ्रो रे हम अप्राइजल कॉन्सेप्ट पाऊ. अप्राइजल जो तांको से मान लिखि किछि दियंती अबाउट आवरसेल्व्स. तो हम सुपीरियर जो माने हमर जो माने हम हायर अथॉरिटी जो माने सी माने हमको अप्राइजल देबे. जेमिति कि गुटे इंडस्ट्रियल पर्पस रे से कहूची एम्प्लॉई को किए दबो ना सुपरवाइजर दबो. Employee also wish to know their positions in the organization. Yes, that is also very important for any employee. That employee must know about their own level at that organization. And appraisal are essential for making many administrative decisions like selection, training, promotion, transfer, wages, salary administration. So these are the generally we consider these are related to different organization or company. Okay. But in if we discuss in our teaching concept at that time some different time we also found our seniors, our officers, okay, our higher officers, higher authorities, they also give different appraisal report about their lower staffs. Okay, तो से जो हमें appraisal report दिया गला according to this on the basis of this appraisal report we can arrange different training or promotion of an individual. ये सब कथा हम टीचिंग प्रोसेस रे भी होउची. जेमति कि तुम माने सुनिथिबो जो सीसीआर लेखा हुए सीसीआर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोली हम बोली कहू जते बेले आमे गुटे कोनसी जॉब रे अछंती सेतिर प्रमोशन चाहूचंती एट दैट टाइम वी नीड ए सीसीआर फ्रॉम आवर हायर अथॉरिटी. तो हायर अथॉरिटी सीसीआर रे तमरो परफॉर्मेंस तमे केते कॉम्पिटेंट तमर आउ केते ग्रोथ हेई परिबो तमे को लेवल पर्यंत तमे डेवलपमेंट तमे निजर करई परिबो ई सब कथा सीसीआर रे बा तमर कोन कोन प्रॉब्लम्स अछि ई सब कथा तम सीसीआर रे लेखा हो. आ सीसीआर बेस रे तुमको प्रमोशन दिया जिवो कि ट्रेनिंग दिया जिवो कोन सिलेक्शन करा जिवो ई सब जिंस तमर रखा जाय. From the above definition, appraisal of a learner can be explained as the work profile that the learner has performed in the previous classes or the work of the learner has completed in the class where he or she is continuing at present. तो प्रेजेंट रे जो जगह रे अछि से केते कंप्लीट करूची से बाबद रे हम अप्राइजल रिपोर्ट मध्ये देई परिबा जे टीचर आवर स्टूडेंट को. सिमिलरली हम लास्ट क्लास रे कोन थिले सेथरु से जगह रो अप्राइजल रिपोर्ट नै कि आसी कि हम नेक्स्ट क्लास रे जो टीचर रहिबे सेमान को देले सेमाने केमिति आवर इंप्रूवमेंट को एन्श्योर करिवे से जिंस को मध्ये अप्राइजल रे हमें करि परिबा. ओके, तो इन इंडिया स्कूल सिस्टम लाइक केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन and other state also already adopted self assessment mechanism or annual performance assessment. Okay, and in an appraisal performa we can find out the few common columns under which information is required from the teacher. Okay, आमे गोटे पिला को जते बेले ग्रेडेशन करूचंती ताकू जते अपग्रेडेड करूचंती गोटे क्लास रो गोटे क्लास को at that time we also maintain some appraisal performa or report for these individuals to know about their different performance level. तो को कॉलम रे सब दिया जाउची देखिबा हमें. The first one is personal information. The teacher provides his or her personal details, employment details etc. ई सब जिन सब दिया तार पेरेंट्स कोन करंती बा तार जो डिफरेंट रिकॉर्ड तार हेल्थ बा तार जो फैमिली कंडीशन तार सोशल स्टेटस ए सब कथा को हमें गोटे पर्सनल इंफॉर्मेशन रे appraisal performa re lekhonti. The next one is self assessment. Teachers are asked to write about their duties, their targets and achievements. Generally self assessment ता mainly teacher को पई applicable रही था जोठी की टीचर कोन लेखंती ना about their duties and their targets, their achievements and their shortfalls.
if they are not able to achieve fully your desired target with justification से कथा को से माने से डिफाइन करंती they are special outstanding contribution to school or organization कोन कोन ताकर स्पेशल बा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होइछि ताकू मेंशन करा जाय परिबो and area where which they have identified for improvement in the next session जोटा कि ସେମାନେ appraisal पाइबा परे from their higher authorities they can try to develop themselves for the next session. The next one is appraisal by reporting authority, that is headmaster and principal. These are the reporting authority, they are our higher authorities we consider generally. So under this section the reporting authority analyzes the self assessment report submitted by the teacher and provide remarks. So गुटे आमे कोन करंती मझिरे मझिरे जो हेडमास्टर प्रिंसिपल माने थांती सेमाने गुटे अप्राइजल परफॉर्मा तयारी करके टीचर को दियंती और टीचर से क्वेश्चन किछि रहिबो से क्वेश्चन आंसर देबे एंड दैट इज ए वे दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट से सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जेतबे गुटे प्रिंसिपल बा गुटे हेडमास्टर पाइबो सेतबेले से सेतिरे रिमार्क दो ओके कारण आमे जेतबेले जो कथा उडा लिखिबा निहाती हम पॉजिटिव लिखिबा किंतु किछि जगह रे भी आमे नेगेटिव थाई पारंती तो से जगह को आइडेंटिफाई करिबा बा से जगह रे कमेंट करिवार ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी काहर नाम हायर अथॉरिटी से जगह रे से माने से काम करंती on the various dimensions like accomplishment of planned work allotted, quality of work, output, analytical ability, the accomplishment of exceptional work, then on foreseen task performed ए सब कथा को से जगह रे देखा जिवो से जगह रे ताकू जज करा जिवो. The next one is appraisal by reviewing authority. So after reviewing the higher authorities, at last they present an appropriate or particular appraisal report about a teacher or about anyone. Okay. तो सही जगह रे सही जो हायर अथॉरिटी रिव्यू करी रिपोर्ट देला पर अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट आमे कोन प्रोग्रेस करि परिबा आगु से जिंस को आमे जज करिबा तो बोथ स्टूडेंट और टीचर पई ए जिंसटा को आमे एप्लीकेबल करि परिबा. The self appraisal report submitted by the teacher and remark grades provided by the reporting authority headmaster जो प्रिंसिपल रहिले are reviewed by the higher authorities जोटा कि एमाने करि सरीबा परे आउ जो हमर हेडमास्टर को ऊपर जो माने थांती हायर अथॉरिटी से माने अगेन ताको रिव्यू करिवे लाइक मैनेजर ऑफ द स्कूल एजुकेशनल ऑफिसर जो माने बीओ बीआरसीसी सीआरसीसी माने जो रहिले दे आल्सो रिव्यू अबाउट आवर सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट तापर से माने गुटे कोन करिवे ना हमकु गुटे ग्रेडेशन देबे बा गुटे हमकु गुटे जो हमर डेवलपमेंट बाबद रे से माने रिमार्क दे कि हमकु आगु को जिबा पई हमकु से माने एनकरेज करे. सो दीज आर ऑल अबाउट योर अप्राइजल कांसेप्ट. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपोर्टेंट. आउ आगु जो तीनटा कथा हमें पढिले तार इंपोर्टेंस अछि बट एबेठु जो कथा गुडा को हम डिस्कशन करिबा पार्ट 1 और पार्ट 2 रे ए कथा गुडा वेरी इंपोर्टेंट. आउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे यू मस्ट गेट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक. सो माइंडफुली लिसन ऑल द पॉइंट्स. आउ जो पॉइंट को मार्क आउट करूची से पॉइंट ऊपर तमे भी पेन एंड पेपर ताकू लेखो आ ताकू क्लियर हो जे एई पॉइंट रे कोन ही परिबो. जदि किछि जहार डाउट रहइबो तमे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करी मते पठेबो मु चेष्टा करिबि ताकू बुझिबा पई. ओके. So here the concept of measurement which is derived from the word measure. तो ये जो मेजर वर्ड टा जो आमे देखुचुती ताकू जदी ए वर्ड टा को हम विभिन्न जगह रे यूज करंती इन वेरियस एस्पेक्ट इन वेरियस वे वी कैन यूज द वर्ड मेजर. तो इन एजुकेशनल पर्सपेक्ट इफ वी एनालाइज द वर्ड मेजरमेंट देन वी फाउंड measurement is a process of assigning numbers. That means it must give a numerical value to an individual or their characteristics. For example, मु कोन कली ना गोटे पिलार हाइट मापिली मु गोटे पिलार हाइट मापुची तो आफ्टर मेजरिंग द हाइट वी गेट a result that is like 6 foot 2 inch 5 foot 11 inch like this. So these are the numerical assigning number, these are the numerical values of an individual to an individual or their characteristics. there are different characteristics को जदी हमें measure करी गुटे numerical data analysis करछु that is the process of measurement according to specific rule and that definition given by Appraisal and Crespi. Okay, then come to the next definition.
that is according to Gay, the term is a process of quantifying. That means quantifying means numerical, assigning a numerical data or value. That is the meaning of quantifying is this, or the degree to which someone or something possessed a given trait, that is quality, characteristics or features. Quality को नहीं की हो बा किसी गुटे characteristics को नहीं की हो बा किसी गुटे features को नहीं की हो, जेतेबेले we assign a numerical value or quantifying the degree, okay, then we consider that concept is come under measurement process. तो ये गोटे एग्जांपल नहीं चंदी हमें Mohan scored 58 mark in a particular examination and Ahmed scored 59. Here in a particular examination we get two data in two students, like Mohan 58 mark rakhila, Ahmed 59 mark rakhila. Their individual scores are the measurement of their performance on particular test. So these data assigned by the examination or measurement, these data define the performance of a particular test. ଗୋଟେ particular test ଉପରେ ତାର performance କେତେ, ସେ କେତେ perform କରିଛି, ତାର जो ability ବା ability को ଆମେ ଏଠି appropriately न କହିଲେ ବି से केते दूर पर्यंत से कॉन्सेप्ट उपरे बा से सब्जेक्ट उपरे तार मास्टरी आसी आमे एथिरु किछि मात्रा रे जानि परिबा. So if analyze the definition of measurement given above, we conclude some characteristics of measurement, and these are the characteristics. Like first one is measurement assign a numerical to quantifying certain aspect of human or non-human being. Human हो बा non-human being को हो, जदि आमे किछि डाटा असाइन करूचोती तार डिफरेंट एस्पेक्ट रे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं की, तो से प्रोसेस टा को आमे मेजरमेंट बोली कहउचोती. It is numerical description of objects, traits, attributes, characteristics and behavior. सब पॉइंट रे numerical concept टा तमे निश्चित कॉमन पाइबो, because measurement always provide a numerical data, and measurement is not an end in itself but definitely means to evaluate at the ability of a person. That means एटी आमे एग्जांपल टा देखि, ठीक अछि. मोहन रखिला 58 मार्क, अहमद रखिला 59 मार्क. हाँ, याक भितर बहुत डिफरेंसेस न थाई पारे. मु जदि एमिति इंटरनली पचारिबी जे हु इज गुड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट कथा एटी कहा है जी, से सब्जेक्ट रे किए टिके बेटर परफॉर्म करूची, तो ऑब्वियसली हम आंसर दबो अहमद. सो आमे मेजरमेंट रे केवल न्यूमेरिकल डाटा पाइबो, ठीक अछि, बट एटा तार लास्ट एंड नुह. After the measurement, we also conduct different concepts or different procedures in concern with evaluation to know about the different characteristics or different aspect of an individual. Okay. तो सेही कतरा से कहूची measurement is not an end, एठी end ही नहीं, ता परे भी अछि, आमे कंपेयर करूछु, ए कथा भी आमे पाखु आसु. So it is itself but definitely means to evaluate the abilities of a person in education and other field as well as. Okay, in generally education field रे जिंसटा को आमे देखंती. आ गोटे एग्जांपल आमे नबा, गोटे क्लास रे 50 स्टूडेंट अछन, एंड मैथमेटिक्स रो गोटे एग्जाम करली जोटा की रहिला 30 मार्क्स रो गोटे एग्जाम पिला को असाइन करली. तो 50 स्टूडेंट कर मु 50 टा रिजल्ट पाइली, स्कोर पाइली. 50 स्कोर को मु कोन करली ना रैंकिंग ऑर्डर रे सजेइली. ओके, तो रैंकिंग सजेइ सरला परे मु एबे वर्तमान कहि परिबी जे मैथमेटिक्स रे से टोटल क्लास रे सबटर बेस्ट किए, तो जी हाईएस्ट मार्क रखिछि, से क्लास कथा मु जदी कहबी, क्लास रे समस्त भितर कंपैरिजन कथा जदी कहबी, we can analyze the data easily by the help of the result which we get from the assessment process. So nature of measurement and assessment vary for various traits or attributes of the students deal with. Okay, आमे आगु गले ये जो डिफरेंट कथा हमर मेजरमेंट और असेसमेंट रो जो कथाटा को हम आउट की क्लैरिफाई हे परिबो. ओके, then here in the process of measurement we found different type of scales. Okay, तो को स्केल अछि हम ताको टिके देखिबा. The first one is whenever we measure anything we assign numerical value. This numerical value is known as scale of measurement. That ये जो numerical value टा को हम scale of measurement बोली को. A scale is a systematic or scheme for assigning values to score to the characteristics being measured.
जो कैरेक्टरिस्टिक्स को आम मेजर कर से कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने पर आम कौ हिसाब से गोटे न्यूमेरिकल डाटा दबा से कथाटा स्केल डिफाइन करे। फॉर एग्जांपल मु हाइट मापिली तो हाइट को मु फीट आउ इंच रे मापिली 6 फीट 2 इंच। मु वर्तमान वेट मापिली मु तो एटी फीट आउ इंच रे तो मापिबि ना मु सेटी किलोग्राम बा पाउंड्स रे मापिबि हला 58 kg। so that is one type of scale, that is another type of scale. Okay, so here in the process of measurement we found different type of scales are assigned or used in the process of measurement. so generally ei bholiya kichi scale tame paibo au jota ki exam point of view be very important to sei kotha guda ko dekhiba। the first one is nominal scale। nominal scale ru tame बुझी परथुबो जे गुटे माने जो नंबर कथा आसुची तो से हिसाब रे ताको कहउची इन नॉमिनल स्केल ए नंबर इज असाइन्ड फॉर कैरेक्टराइजिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन और थिंग दैट कैटर्स नो ऑर्डर टू डिफाइन द एट्रीब्यूट्स एज वेरी लो मोर लेस बिग स्मॉल सुपेरियर इंफेरियर एक्सेट्रा। क्लियर टू ऑल। जते बेले हम गोटे डाटा दबा सेठी कंपैरिजन हुए गोटे फिक्स्ड डाटा ताकू देली तो स्केल रे मु गोटे डाटा प्रोवाइड कली जो डाटाटा की आमे ताकू कंपेयर सेही डाटा को नै कि सेही पिला सहित आमे आ किछि कंपेयर करि परिबिनी। हां से डाटा को नै कि अदर पिलार डाटा को आमे कंपेयर करि परिबा किंतु सेही पिला सेही जेमिति कि हाई लो मोर लेस बिग स्मॉल सुपेरियर इंफेरियर ए सब जिंस को आमे देखिबा नाही। इन नॉमिनल स्केल असाइनिंग नंबर इज प्योरली एन इंडिविजुअल मैटर। जो नंबरटा आमे देइछथि गोटे पिलार आमे हाइट मापिलु 6 फीट 2 इंच जो 6 फीट 2 इंच टा फिक्स्ड फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जगह रे से नंबर को नहीं कि आमे आ किछि कंपेयर करि परिबानी जोटा को आमे हम नॉमिनल स्केल बोली कहउछथि। तो एठी सिंपली गोटे कांसेप्ट मन रखिबो नॉमिनल स्केल कांसेप्ट आसीबो माने नंबर रो कथा आसीबो जो जगह रे जो स्केल मेजरमेंट प्रोसेस रे आमे नंबर असाइन करिबार यूज करूछथि दैट स्केल इज नोन एज नॉमिनल स्केल। ओके देन सेकंड वन इज ऑर्डिनल स्केल। Ordinal scale is synonymous for ranking or grading. Okay, sometimes we also after getting different marks, okay, we arrange the students mark in a particular order, ascending ho descending ho ए भले किछि particular order रे हमें ताको सजांती जोटा को हमें कोन कहंती ranking कहंती बा grading कहंती। एमिति एबे जो एग्जामिनेशन सब होउची सेतरे आ मार्क जेमिति तम माने पढिला बेले पधे थिबो कार मार्क थिबो कार ग्रेड भी थिबो बट नाउ इट इज ऑल फुल्ली आमे कोन करछु केवल ग्रेड असाइन करछु ए प्लस प्लस बी ए भले आमे ग्रेडिंग प्रोवाइड करछु। तो जते बेले रैंकिंग कथा आसे ताको मार्क स्कोर को नेकी पिला को रैंक करा जिवो बा ताको गुटे ग्रेड असाइन करा जिवो इन दैट केस इन दैट प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज कम अंडर बा जो स्केल रे ई जो मेजरमेंट प्रोसीड्यूर गुडा को मेजर करा जाउची से स्केल टा को हमें ऑर्डिनल स्केल बोली कहउछु। It includes the characteristics of a nominal scale आउ एटा बेस होबो कहा थ्रो रे कहा ये रे ना nominal scale रे and provides an order to the measurement like when we know the achievement scores of a student in a group we can arrange them in either ascending or descending order। already हम ए कथा को डिस्कशन कर सारछन। The next one is interval scale। Interval scale carries all the characteristics of earlier scale like nominal and ordinal। interval भितरे both nominal और ordinal scale रो characteristics रहिबो added with an attributary 0 point। okay that means तमे कोन गुटे मार्क रखिछो सेही मार्क टा को भितरे रहिला केते केते गुटे रेंज रखी की से रेंज भितरे मार्क को असाइन करा जाय ये रेंज रो पिला से रेंज रो पिला एई कथा को हमें डिस्ट्रीब्यूट करि परिबा and that is there is no absolute 0 point or true 0 point in the process of interval scale। there was a concept of 0 point but actually hame jo taku dekhiba seti kichi 0 point ba true 0 point ro concept nahi। in this scale we can group the score into equal intervals like scores within the interval like 0 to 5 5 to 10 10 to 15 like this is called the equal interval scale। also interval scale is otherly known as equal interval scale as the size of the class are equal। that is size of the class 0 to 5 5 10 to 5 5 10 to 15 5 to 10 5 10 to 15 5 okay
तो ये इक्वाल स्केल रे जेहेतु आम इंटरवल स्केल को लेखती स्केलिंग करती मापती ड्यू टू दैट इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वाल इंटरवल स्केल तो जिते स्केल रो कथा आसीबो इंटरवल कथा आसीबो गोटे रेंज रो कथा आसीबो तो से रेंज कथा आसीबो माने आमे जानिबु सेटा कहा अंडर रे आसुची इंटरवल स्केल अंडर रे आसुची द नेक्स्ट वन इज रेशियो स्केल रेशियो स्केल इज called as a highest scale of measurement. It carries all the characteristics of earlier discussed scale. Ratio scale रो nominal scale रो characteristics भी रहइबो ordinal scale रो characteristics भी रहइबो आमे ratio scale रे number को भी यूज करिबा ranking को भी यूज करिबा interval को भी यूज करिबा okay and scale with a true or absolute 0 point interval scale रे arbitrary 0 point रो कथा कहिला but absolute 0 point by true 0 point कथा को से डिनाई कला similarly here in ratio scale there was a concept of true or absolute 0 point as there are absolute 0 point in this measurement we can say that zero height means no height zero height means no height zero means no a concept को ratio scale रे maintain करा जाए but in the case of interval scale we cannot say that zero intelligence means no intelligence. There was no concept of zero intelligence. All type of measurement conducted in physical science such as physics, mathematics, etc. are done by ratio scale. Okay, जतबेले आमे जो different generally physical science रो जो subject को जतबेले आमे measure करंती से subject को measure कला बेले generally आमे ratio scale को use करंती. Ratio scale are almost non-existent in psychological and educational measurement except in case of psychophysical measurement. तो रेशियो स्केल टाको बहुत मिनिमम यूज करा जाए जेहेतु हायर ऑर्डर प्रोसेस रे से कांसेप्ट जाए तो जनरली आमे साइकोलॉजिकली आउ एजुकेशनल मैनेजमेंट रे बहुत रेयर आमे ताको यूज करू बट सम केसेस जो साइको फिजिकल केस रे मेजरमेंट केस रे बहुत साइको और फिजिकली जते बेला आमे जो मर्ज मैनर रे मेजर करिया कथा चिंता करंती एट दैट टाइम वी यूज रेशियो स्केल बिकॉज़ इट इज साइको दीटा कांसेप्ट रहउची आ तुम माने जानि छ रेशियो रे दीटा जिंस तमरो मेंटेन हुए ओके तो these are all about different concept of test assessment and measurement so आमे नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट पार्ट को जिबा आ सेठी आमे अदर जो असेसमेंट आ इवैल्यूएशन पार्ट को डिस्कशन करिबा क्लियरली these two part are very important stay tuned with us for the next class thank you